Okay, good evening everyone. So today we are म्हणजे आपण लास्ट पार्ट मध्ये आहे लास्ट पार्ट ऑफ ऍप्लिकेशन्स ऑफ डेरिवेटिव्स. सो कल अपन ने रोल्स थेरम LMVT आणि हे सगळं बघितलं. ओके, अपन ने एक एग्जांपल किया जिसमें अपन ने रोल्स थेरम वेरीफाई किया. फर्स्ट कंडीशन रोल्स थेरम ची f of x should be continuous, f of x should be differentiable. Third, f of a is equals to f of b, and there exists at least one point ज्याला आपण c म्हणतो where f dash of c is equals to 0. ओके, फिर उसके बाद आते आपण LMVT मध्ये म्हणजे लॅग्रेंजेस मीन व्हॅल्यू थेरम. त्याच्यात काय प्रूव्ह करावं लागतं मीन्स फर्स्ट दो कंडिशन वैसे ही अगर फर्स्ट दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो आपण काय म्हणतो f dash of c is equals to f of b minus f of a upon b minus a म्हणजे क्लोज्ड इंटरवलचे लिमिट्स असतात एंड पॉइंट्स a and b. ठीक आहे. देन कम्स geometric meaning of LMVT. Okay, LMVT, geometric meaning of LMVT, Lagrange's mean value theorem. So कसा है, if y is equals to f of x is continuous and differentiable in a comma b, then there exists at least means it can be more than one also, at least one point p on the curve, very important, in AB म्हणजे तो कर्व A to B च्या मध्येच राहणार आहे, where tangent is parallel to the chord passing through A and B. पासिंग थ्रू ए एंड बी. अब इसका लिखने का मीनिंग ऐसा है, पासिंग थ्रू ए एंड बी म्हणजे ना ए एंड बी आर नॉट पॉइंट्स, ए एंड बी हे इंटरवल आहे, बट देयर विल बी सर्टन पॉइंट. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल घेऊन घेऊ आपण, कोई भी रैंडम कर्व ले लेते हैं. सो वी गेट दिस इज असा एक रैंडम कर्व घेऊन घेऊ आपण, कैन बी एनीथिंग. ओके, सो अगर मैंने ड्रॉ किया ये ए और बी से, इफ आई ड्रॉ दिस लाइन, तो कुठे ना कुठे एक टँजंट राहणार आहे. और उसको क्लियर कर लेते हैं. त्याला आपण सोपी एकच कर्व ठेवू, दो कर्व क्यों रखने का, नाही तर कन्फ्युजन होईल तुम्हालाच. एक ऐसा रैंडम कर्व ले लेते हैं. ही त्याला हे देयर विल बी ॲटलीस्ट वन पॉइंट दॅट विल बी टँजंट टू द कॉर्ड जिथे तुमचा पॉइंट्स आहे. सो पॉइंट्स कैन बी लाइक दिस, a कॉमा f of a, एंड इधर आएगा b कॉमा f of b. Can be anything, but उनका interval will be from A to B, and there will be at least one point जिससे tangent will be parallel to this chord जिथे A and B है, through A and B. Okay, now usually we don't say like this passing through A and B, but for understanding apply समजण्यासाठी it is not the exact point A comma B, it is basically your A and B intervals A and B. त्याला तसंच consider करायचं. So this is geometric meaning of it. ठीक है. Then we go on to another important theorem which is called Cauchy's, Cauchy, Cauchy's mean value theorem. Okay, now Cauchy's mean value theorem चं प्रोनाउंसिएशन तुम्हाला प्रोनाउंसिएशनचं काही करायचं नाही आहे, बट आपण अभी तक बचपन से मैं सीखते आ रहा हूँ दैट इट इज कॉल्ड कॉशी. ठीक है, CAUCHY. बट इधर आके मुझे समझा कि इट्स नॉट कॉशी, इट्स प्रोनाउन्स्ड एज खुशी. नॉट आपल्यासारखी खुशी नाही, इट्स कोशी. तर
तसंच त्याला प्रोनाउन्स करतात. प्रोनाउन्सिएशन काय करायचं आपल्याला कॉन्सेप्टचं इम्पोर्टन्स आहे, तर वी विल कीप इट कॉन्सेप्चुअली करेक्ट. ठीक है, बट इट्स प्रोनाउंस्ड कुशी, वी कैन प्रोनाउंस कॉशी आल्सो बिकॉज़ बचपन से वही सुनते आ रहे हैं, हम तो भी वही सुनते आ रहे हैं. ओके, सो बेसिकली Cauchy's mean value theorem is also called extended mean value theorem. Extended mean value theorem कसा सांगतो? ओके, एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम. सिंस मीन वैल्यू थ्योरम है, कंडीशंस तो वही होने चाहिए उसके. कंडीशंस क्या क्या है? फर्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a comma b. सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल. अब यहाँ पे और एक ऐड करना है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस. और एक मैं ऐड दोन फंक्शन्स येतात इथे, एफ ऑफ एक्स अँड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी. एफ ऑफ एक्स अँड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल in open interval a comma b, then and of course तुमचं हे नाही राहायला पाहिजे, then there exists some c, point c म्हणू आपण, such that म्हणजे a and b मध्येच राहायला पाहिजे तो, such that f dash of c upon g dash of c is equals to f of b minus f of a अपॉन, अगर तुमने गेस सही किया होगा तो, g of b minus g of a, where g dash of c is not equal to 0 of course, कारण कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी. So this is extended mean value theorem. Condition remains the same, फक्त इथे एक मिळतं. So क्वेश्चंस करेंगे आज उसके ऊपर, आज ज्यादा नहीं करना है, वी विल फिनिश ऑफ द टॉपिक. अभी तक जितने एग्जाम्स हुए त्याच्यात मला खूपदा कॉशीज वगैरे दिसलं नाहीये. एलएमव्हीटी दिखाय मुझे, रोल्स थेरम का यूज दिखाय, कॉशीजचा खूप जास्त एखाद प्रॉब्लेम वगैरे आला असेल, बट उसके ऊपर मुझे कॉशीज का प्रॉब्लेम दिखा नहीं. सो वी वोंट बी फोकसिंग टू मच ऑन दॅट, बट वी विल बी स्टडिंग इट, कारण की तुम्हाला 12th स्टँडर्डच्या बोर्ड्स मध्ये नाहीये. ओके, सो क्वेश्चन आहे, इफ f is a function such that it is from my closed interval -5 to 5 to r is differentiable. अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस रहना जरूरी है. यस, करेक्ट. डिफरेंशिएबल एंड f dash of x does not vanish anywhere. Does not vanish मतलब it is not equal to 0 basically. Does not vanish anywhere मतलब वो डोमेन में -5 to 5 to r में, then prove that f of -5 is not equal to f of 5. काय म्हटलंय त्यांनी? f of -5 is not equal to f of 5. ओके, इजी आहे. उसने क्या बोला है? डिफरेंशिएबल आहे and f dash of x does not vanish anywhere. तो देखते हैं वॅनिश म्हणजे काय झालं त्याला, बेसिकली it's not 0. So we can consider, instead of Rolle's theorem, we can consider LMVT. कारण की त्याच्यात आपल्याला पुष्कळशे हे मिळतील. So first is every, लिख के रखो मतलब बाद में भूलेंगे नहीं, differentiable function, every differentiable function is continuous, therefore f is पहली condition, f is continuous on closed interval -5 to 5. Second, f is differentiable on open interval -5 to 5. Therefore, by LMVT,
f dash of c is equals to f of 5 minus f of 5 minus f of minus 5 upon 5b म्हणजे हा b हा a minus of minus 5. Make sense? Okay. So 5 डिनोमिनेटर में देखो 5 माइनस ऑफ माइनस 5 इज +5, so 5 + 5 10, इसको इधर लेके आया तो 10 f dash of c is equals to f of 5 minus f of minus 5, but f dash of c is not equal to 0. ये कैसे पता चला मुझे? हे कसं कळलं मला की इसने बोला है कि f मतलब f dash of x does not vanish anywhere, so there is no point or there is at least one point like c who does not vanish in this problem. ठीक है, याचा अर्थ तो इक्वल टू 0 नहीं है, वैनिश नहीं हो रहा मतलब इक्वल टू 0 नहीं है. याचा अर्थ अगर मैंने वैल्यूज पुट अप किया तो 10 टाइम्स f dash of c is also not equal to 0. ये इक्वेशन से इक्वेशन 1 दे दो उसको लगे तो, सो देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 f of 5 minus f of minus 5 is not equal to 0, इसको इधर लेके आ गए, so f of 5 is not equal to f of minus 5. f of 5 is not equal to f of minus 5. वही प्रूव करना था अपने को. So these are applications of LMVT basically. Okay. So क्वेश्चन करू आपण. फाइंड क्वेश्चन आहे फाइंड the value of c, find the value of c in LMVT. LMVT means Lagrange's mean value theorem. For the function f of x is equals to log of sin x. F of x is equals to log of sin x in the interval pi by 6 comma 5 pi by 6, pi by 6 comma 5 pi by 6. Okay, find the value of c in LMVT for the function f of x is equals to log of sin x in the interval pi by 6 comma 5 pi by 6. Okay, so let's see अपन काय करू शकतो. Now first is पहले तो f of a और f of b निकाल लेते हैं. So f of 5 pi by 6 is equals to log of sine of 5 pi by 6, log of sine of 5 pi by 6. तो त्याचा आन्सर काय येणार आहे 5 pi by 6. अब क्या कर सकते हो तुम, थोड़ा लक्ष द्याल. 5 pi by 6 अपन pi by 6 कंसिडर करूँ. pi by 6 मतलब 30 डिग्रीज, तो 5 टाइम्स 150, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, सो बेसिकली यू कैन राइट दैट इज साइन pi by 6. सिन्स इट्स पॉझिटिव्ह आपण त्याला साइन pi by 6च लिहू शकतो, विच इज log of sin 30 किती असतं 1/2, उसको ऐसे लिख सकते हैं -log 2. एक झाला. मग आपण 5 pi by 6, so is equals to log of, आता तर इथे डायरेक्टच sin pi by 6 आहे फर्स्ट क्वाड्रंट, सो वी गेट -log 2. दोघांचंही आन्सर -log 2 आलं. ओके, अब f dash of c बघू. f dash of c is equals to f of 5 pi by 6, अपन Lagrange's mean value theorem क्या रहता, f of b minus f of a upon b minus a. So f of 5 pi by 6 का येणार आहे, इधर मैंने pi by 2 लिखा था. f of 5 pi by 6 क्या f dash of c ला कसं लिहू आपण, f of pi by 6. f of b, तो f of b म्हणजे log of sin b, म्हणजे log of -log 2 माइनस इधर क्या आएगा तुम्हारा .
f of a, which is again minus log 2. So minus log 2, okay, upon b minus a, 5 pi by 6 minus pi by 6, which is equals to 0. डायरेक्टच है, पर f dash of c is equals to 0 और मैंने f dash of c निकाला ही नहीं. तर आपण पहिले f of x लिहू. f of x किती आलं तुमचं? log of sin x. So f dash of x will be 1 by sin x into ddx of sin x, which is cos x, that is equals to cot x. ठीक है. Therefore इसको इक्वेशन 1 दे दिया. Therefore cot c is equals to 0, क्योंकि f dash of c will be cot c is equals to 0. The c is equals to pi by 2, और पाई बाय 2 5 पाई बाय 6 और पाई बाय 6 के बीच में आता है, मतलब 5 पाई बाय 2 30 डिग्री और 150 डिग्री के बीच में आता है. क्या आता है? सो इट बिलोंग्स, सो देयर इज दिस पॉइंट, यहाँ पे c बिलोंग्स टू, मतलब c इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 belongs to pi by 6 to 5 pi by 6. Of course it belongs to pi by 30 और 150 डिग्री के बीच में 90 डिग्री आना है. सो इट इज क्वाइट इजी. ऐसा कुछ तुमको बहुत ज्यादा उसके ऊपर मेहनत नहीं करना है कि बापरे काय झालं आणि काय नाही. अगेन इट हैज नॉट बीन आस्क्ड टू मच. एखाद वेळेस एखाद आलं सीईटी मध्ये वगैरे येऊ शकतं, बट अगर एखाद बार आया तो आया, वरना अभी तक ऐसे ये इस पे, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा मैं फोकस भी नहीं करूंगा आणि याच्यावर हे पण नाही. पण इसके पहले के जो थे अप्रोक्सीमेशंस, रेट मेजरर, त्याच्यावर क्वेश्चंस आले हैं, तो वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग रखना तुम्हारा. ओके. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन आहे, प्रूव दैट mod of tan inverse of x minus tan inverse of y is less than or equal to mod of x minus y. Okay, where x for all, this is ulta hai, matlab for all x comma y belongs to R. Let's say let's go with the basic thing. म्हणजे आता तुमची फंक्शनचं लिमिट आहे f of x is equals to tan inverse of x, where म्हणजे then असं लिहायला याला, f of x is equals to tan inverse of x. Consider, let, then for some अल्फा किंवा सी पण म्हणू शकता तुम्ही, अल्फा बिलॉंग्स टू एक्स कॉमा वाय. त्याचा आपण डोमेन सेट केला एक्स कॉमा वाय. ओके. अब अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्स है, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा तुम्हारा? tan इनवर्स ऑफ एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. बहुतेक याची गरज नाही पडणार, बट अपना काम है निकाल के रखना. नाउ एफ डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर. ठीक है. पर by LMVT can I say f dash of alpha is equals to, LMVT की आखिरी कंडीशन, f dash of alpha is equals to tan inverse of y, किंवा स्टेप वाइज जाऊ, f of b minus f of a अपॉन b minus a. तुम इसको c भी लिख सकते हो, किसी ने रोका नहीं है तुमको. c कंफ्यूज करत नाही, c कंफ्यूजन क्रिएट करू शकता म्हणून, बट सी लिया तो कोई प्रॉब्लेम नहीं है. तुमको वैसे भी कैलकुलेशंस नहीं बताया, तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर सांगायचा आहे. सो तुमचा b आहे y. सो f of that is equals to f of y minus f of x अपॉन y minus x. ठीक है. अब सिंस मुझे f डैश ऑफ अल्फा यहाँ पे 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर दिख रहा है, और f of y बेसिकली tan इनवर्स ऑफ y माइनस tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y माइनस x. ओके. अब ध्यान दो, 1/, म्हणजे जेव्हा आपण tan इनवर्स मध्ये जातो, तर 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर बेसिकली, नाउ 1/1 plus alpha square is less than or equal to 1. 1/1 plus alpha square is less than or equal to 1. So by that logic, tan inverse of y minus tan inverse of
x upon y minus x is less than or equal to 1 बराबर करेक्ट. अब इसको मेरे को माइनस ये करना है. तर मी याला काय करेल मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ y माइनस tan इनवर्स और टू बी प्रिसाइज मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. क्या प्रूव करना है वहां पे चले जाते हैं. tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू 1. इसको इधर भेज दिया तो tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y is less than or equal to mod of x minus y is less than or equal to mod of x minus y. Okay, so we got this mod of tan inverse of x minus mod of tan inverse of y is less than or equal to mod of x minus y. हे लक्षात ठेवा बस. इमॅजिन करके देखो put the values alpha is equals to 1 टाकलं तर 1 upon 1 plus 1 will be less than or equal to 1. Even if I put alpha is equals to 0 or negative values, it will always be less than or equal to 1. सिंपल कॉमन सेंस है. अगर मैंने अल्फा की वैल्यू 0 डाली तो 1 आएगा. अल्फा की वैल्यू फिर मैंने नेगेटिव भी डाली और पॉजिटिव भी डाली तो भी इट विल बी पॉजिटिव कारण की 1 अपॉन एंड 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग विल ऑलवेज बी लेस देन 1. सो त्याच्यासाठी आपल्याला ते करायचं आहे. एक लास्ट एग्जांपल अपना ये टॉपिक का मग मी काही इम्पॉर्टंट घेईल. इफ a comma b belongs to R and a less than b, then prove that there is at least one real number c belongs to a comma b such that b square plus a square upon 4c square is equals to c upon a plus b. ठीक है. सो अब सबसे पहले शुरू करते हैं 4c स्क्वेअर पासून. तर 4c स्क्वेअर म्हटलं तर व्हॉट वी गेट इज कसं येईल ते पण सांगतो. अब सी स्क्वेअर बोला तो 4c स्क्वेअर नाही तर आपल्याकडे 4c क्यूब आहे. तर फंक्शन आपण घेऊन घेऊ f of x is equals to x to the power 4 कारण की f dash of x will be 4x cube. तर f dash of c will be 4c cube. Okay, by LMVT Lagrange's mean value theorem, by LMVT अपने को क्या मिलता है f dash of c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. So उस हिसाब से f of b मतलब आएगा b to the power 4 minus a to the power 4 upon b minus a. ठीक है. तो f dash of c is 4c cube. ये तो यहाँ तक आ गया अपना 4c cube. b to the power 4 can be broken down as b square square minus a squared square upon b minus a. So I get 4c cube is equals to a square minus b square. तो b square minus a square into b square plus a square upon b minus a. काय काय प्रूफ करायचं आहे बघत जाऊ आपण. b square plus a square तो चाहिए मुझे. ठीक है. और तोड़ते इसको 4c cube is equals to b square minus a square को मैंने तोड़ा b minus a into b plus a into b square plus a square upon b minus a. करेक्ट. अब देखते क्या क्या कर सकते हैं अपन. b plus a को यहाँ पे नीचे ला लिया. 4c square 4c cube upon b plus a is equals to b square plus a square. तो क्या क्या चाहिए मुझे वो देखते हैं. अब काय प्रूफ करायचं आहे. बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर. तो ये c स्क्वायर इधर आ गया. 4c स्क्वायर इधर एक c बचा on b plus a is equals to b square plus a square upon 4c square.
Hence proof. तुमको proofs तो नहीं पूछे जाएंगे, but this is how you use LMVT. Again, पुन्हा एकदा, it's not asked that much, but एक आध बार वगैरह पूछा है तो अपन रिस्क क्यों लेना, सब कुछ पढ़ लेने का है ना, रिस्क नहीं घ्यायची. So this is your applications of derivatives. मैं कल कुछ important problems लूंगा और उसके ऊपर फिर अपन आगे जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स. ओके, सी यू टुमारो.